Hello, dear students. Welcome to my channel Sociology Made Easy. So, today our topic is Interactionist perspective of sociology, that is, understanding society at the micro level. तो माइक्रो लेवल पे हम कोशिश करेंगे सोसाइटी को और सोशियोलॉजी को समझने की. The meaning of interactionist perspective in sociology is that it focuses on how individuals interact with each other and the symbols and meanings they attach to those interactions. तो इंडिविजुअल्स कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और क्या सिंबल्स और मीनिंग्स अटैच करते हैं उन इंटरैक्शंस से, वो हम समझते हैं इन interactionist perspective, or that is understanding micro level social processes. Micro level social processes कैसे important हैं in shaping the society. और इसको जब हम इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव के थ्रू हम सोशियोलॉजी को या सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं, सो वी टेक इनटू कंसिडरेशन द फेस टू फेस इंटरैक्शंस को ध्यान में रखते हैं. साथ ही में सिंबॉलिक मीनिंग उन फेस टू फेस इंटरैक्शंस में जो गेस्चर्स हैं, जो वर्ड्स हैं, जिनको हम सिंबल्स बोलते हैं, उनका मीनिंग कैसे इंपॉर्टेंट है इन अंडरस्टैंडिंग द सोशल रियलिटी. So, this perspective basically focuses on how individuals interpret and respond to one another actions and create a shared understanding of the social world. तो social world की एक shared understanding को create करने में helpful होती है interactionist perspective. Now, by examining micro level interactions, we gain insight into larger social dynamics that emerge from these everyday encounters. So, everyday रोज हम किसी न किसी बहाने, किसी न किसी सिचुएशन में we interact with different number of people. Now, उन इंटरैक्शन से, एक माइक्रो लेवल इंटरैक्शन से हम कैसे लार्जर सोसाइटी को, लार्जर सोशल डायनामिक्स को समझने की कोशिश करते हैं. तो इसमें इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में वी हैव few important key points which we need to be which we need to take into consideration in order to understand this perspective. तो वो की पॉइंट्स क्या हैं? सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, small scale interactions, self and identity, role theory, labeling theory and ethnomethodology. तो अब इन की पॉइंट्स को मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करूंगी. जैसे कि फर्स्ट वन इज द सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म. This theory was developed by scholars like George Herbert Mead and Herbert Blumer. उन्होंने बोला that individuals they communicate through symbols and create shared meaning to those symbols. तो symbols क्या है? Words हो गए, gestures हो गए. तो individuals कैसे communicate करते हैं? इन symbols के through. और उन symbols का कुछ shared meaning निकालते हैं. वो shared meaning guide करता है उनका behavior in the social situation. So this is the gist, you can say, of symbolic interactionism. Second important point here is small scale interactions, that is face to face interactions. So we take into consideration here the importance of face to face interactions and examining how people interpret and respond to each other's actions and words in everyday life. The third point here is self and identity. Now self and identity की जब बात होती है तो एक स्कॉलर है मीड, जिन्होंने एक थ्योरी दी थी लुकिंग ग्लास सेल्फ, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ which suggests that our self concept is shaped by how we perceive others perceive us. So when we perceive how others are perceiving us, एक concept develop होता है self का concept. So this is also studied in the interactionist perspective. Then the next one is the role theory. Role theory is this perspective also looks at how individuals take on and perform roles in the society. अब roles क्या हैं?
Roles are set of expectations associated with a particular position or status. तो क्या expectations हैं रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पोजीशन और स्टेटस? हर इंडिविजुअल का कुछ पोजीशन है, कोई स्टेटस है इन द सोसाइटी, उससे रिलेटेड जो एक्सपेक्टेशंस हैं दैट इज द रोल, दैट इज द सेट ऑफ रोल्स. Now, this particular perspective looks upon how individuals they take their role and perform their roles. Next is the labeling theory. Labeling theory, interactionist क्या है? They are concerned with the consequences of labels. Labeling theory में क्या important है? Label. इंडिविजुअल्स को कैसे सोसाइटी लेबल करती है और कैसे वो उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट और बिहेवियर को वो लेबल इन्फ्लुएंस करता है. क्लियर? सो दे आर कंसर्न्ड विद consequences of labels and how they can affect individuals self concept and behavior. For example, being labeled as a criminal may lead someone to adopt a deviant identity. तो कोई अगर लेबल हुआ है, लेबल्ड है एज अ क्रिमिनल, तो वो उसकी डिविएंट आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करता है. दैट पर्सन में अडॉप्ट अ डिविएंट आइडेंटिटी बिकॉज of being labeled as a criminal. And lastly, the important point here is ethnomethodology. Now, this approach examines how people make sense of their social world and maintain order in their interactions by following unwritten rules and norms. तो इस अप्रोच में हम इस चीज का भी ध्यान रखते हैं, इस चीज को भी पढ़ते हैं दैट हाउ पीपल मेक सेंस ऑफ देयर सोशल वर्ल्ड, अपने सोशल वर्ल्ड का मतलब कैसे समझते हैं और कैसे अनरिटन रूल्स और नॉर्म्स के थ्रू सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं थ्रू इंटरैक्शंस. Now, here are few important interactionist sociologist जिसको मैं briefly जिनकी contributions मैं आपको बताऊंगी in the next video. So thank you so much students for listening.